welcome everybody. This is your host, uh, Dr. Mohan, and we are live again. So कुछ resources थी, मुझे लगा कि it's very good thing to share them regarding next dental PSC. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा था तो आई थॉट वो स्टॉप हो जाता है प्रॉबेबली. तो वी विल बी जस्ट लाइक रीडिंग द एमसीक्यूज पीवाई डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल पे उसका जल्दी से जल्दी कर देंगे होपफुली. So these are the previous year questions from the dental surgeon exam from the Sikkim state. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का, एमसीक्यू का पेपर टू का. उसमें भी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, लाइक जैसे मैंने कहा कि पार्ट वन वॉज कंटेनिंग एमसीक्यू, पार्ट टू एसएक्यूज और लास्ट वाला पार्ट थ्री जो था वो एलएक्यूज का था. तो व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट लोकल फैक्टर contributing to the malocclusion? So A option is early loss of primary maxillary incisors. B option is prolonged retention of the primary teeth. C option is ankylosis of the permanent teeth. Or last all option है impaction of the permanent teeth. So what is the most frequent local factor contributing to the malocclusion? So this is the first MCQ from the Sikkim dental surgeon examination. Okay. Then second question है उसका, which type of space maintainer should be contraindicated in a child suffering from subacute bacterial endocarditis? काफ़ी काफ़ी डिफरेंट एमसीक्यूज है इसके लिए मुझे लगा कि इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सिक्किम डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन जो भी थी पीएससी की, काफ़ी काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट, पेपर वन पेपर टू, उसमें भी पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ और सेकंड में भी पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री. तो काफ़ी डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम होगी. एमपीएससी का तो सभी को पता है कि सिंपली कभी कभार विदाउट रिटन एग्जामिनेशंस भी डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा देती है महाराष्ट्र स्टेट या कमीशन जो भी है, और समटाइम्स लास्ट टाइम जैसा पहले रिटन बाद में इंटरव्यूज़, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग. बट पीएससी डेंटल के लिए एलएक्यूज और एसएक्यूज लिखना इज़ लाइक काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट है ना, इतने बड़े पैमाने पे वो सब चीज़ें याद रखना और मैक्सिमम मार्क्स लेना, जैसे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होती है सिंपली फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल ईयर की, उसी टाइप में भी इन्होंने शायद किया है. तो वी आर गोइंग टू जस्ट लाइक move towards second question. So which type of space maintainer should be contraindicated in a child suffering from the subacute bacterial endocarditis? So option A is removable, option B is crown and loop, C is band and loop, and last is distal shoe. Okay. पीडो से क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया in edentulous mandibular ridge. Okay, so A option is buccal shelf, B is crest of the ridge, C is retromolar pad, and D is lingual flange. So what is the primary stress bearing area in the edentulous mandibular ridge? बकल शेल्फ होता है या क्रेस्ट ऑफ द रिज होती है, रेट्रोमोलर पैड है या लिंगल फ्लेंज है. तो पीड़ो के दो क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस कह सकते हैं, एक ऑर्थो का भी उसमें आ सकता है क्वेश्चन. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्प हॉर्न इज मोस्ट लाइकली टू बिकम एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ preparing a cavity in a deciduous molar? Okay, so which of the following pulp horn is most likely to become exposed during the process of preparing a cavity in a deciduous molar? So whether it's mesiobuccal of first molar,
B option is distobuccal of the first molar. C is mesiobuccal of the second molar और डिस्टोबक्कल ऑफ द सेकंड मोलर. तो डिसिडियस मोलर्स की जब कैविटी प्रिपरेशन होती है तो सबसे ज़्यादा रिस्क पल्प हॉर्न जो होता है उसको एक्सपोज होने की कौन से वाले, तो फर्स्ट या सेकंड, और दोनों में से एक, या मेजियोबक्कल और डिस्टोबक्कल. तो इट्स अ वेरी गुड एमसीक्यू, फिर से पीडीओ से आए हैं. Then we have fifth question. What could be the potential cause of a burning sensation in anterior palate of a patient who has recently started wearing a new complete denture? Okay. So overextension in labial sulcus area. B option is occlusal discrepancies. C option is inadequate relief of incisive papilla. और लास्ट वाला है रफ पैलेटल सर्फेसेस. सो प्रोस्टो से क्वेश्चन है कंप्लीट डेंचर से. अगेन आई एम रिपीटिंग, what be the potential cause of burning sensation in the anterior palate of a patient who has recently started wearing a new complete denture? तो ओवर एक्सटेंशन हो सकता है लेबियल सर्कस एरिया में, या ऑक्लूजल डिस्क्रिपेंसीज से हो सकता है वो चीज, या इनएडिक्वेट रिलीफ हो सकता है इंसिसिव पैपिला अगर वो हुआ तो, या रफ पैलेटल सरफेस. तो चारों ऑप्शन में से क्या चीज है जो बर्निंग सेंसेशन करती है व्हेन पेशेंट इज एक्चुअली वेयरिंग अ न्यू डेंचर? ओके. So, moving towards the sixth question, again from the Sikkim Public Service Commission Dental Surgeon exam. The function of occlusal rest seat in a removable partial denture is. So, A option is to resist the vertical force of occlusion. B option is to stabilize the denture. C option is to prevent the lateral forces acting on the tooth. And D option is to increase retention of the partial denture. Okay. तो फंक्शन ऑफ एन ऑक्लूजल रेस्ट सीट इन आरपीडी, वर्टिकल फोर्स जो है वो उसको रेजिस्ट करना है या स्टेबलाइज करना है, या लैटरल फोर्सेस है उसको प्रिवेंट करना है, और टू सिंपली इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ द पार्शियल डेंचर. सॉरी, प्रोस्टो से क्वेश्चन अगेन सेवंथ वाला. अ प्रेग्नेंट पेशेंट in her second trimester experiences syncope during the extraction of the upper molars, and it is advisable to position her in which of the following positions? So Trendelberg position, A option. B option is head down towards her feet. C option is right lateral position, or D left lateral position. So again I am repeating, a pregnant patient in her second trimester experiencing syncope during the extraction of the upper molar. So position कौन सी होनी चाहिए advisable considering her pregnancy? तो Trendelberg position, head down towards her feet, या right lateral या left lateral. The eighth question from the same question paper is like, what is the principal role of ammonia in the case of syncope after administration of the local anesthesia? So A option is vasomotor stimulant, B is respiratory stimulant, C is vagal stimulant, or D inhibitor of the vasomotor tone. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल रोल? अमोनिया जब भी सिंकोप की जगह पे यूज किया जाता है, अगर वो आता है लोकल एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में, तो बेसिक अमोनिया जो एम्प्यूल्स होते हैं सिंपली, तो व्हाट एग्जैक्टली दे डू? सो वेदर दे हैव वासोमोटर स्टिमुलेंट की तरह एक्ट होते हैं, या कुछ रेस्पिरेटर स्टिमुलेंट की तरह एक्ट होता है वो अमोनिया, या वाइगल स्टिमुलेशन करता है, या इनहिबिशन करता है वासोमोटर टोन. Then ninth question MCQ, bucket handle fractures are typically observed in children, soldiers, edentulous persons और young adults. तो ओरल सर्जरी से क्वेश्चन है कि विच एज ग्रुप इज और विच persons are typically suffered
this kind of fractures. Bucket handle fractures. So children, soldiers, edentulous persons or young adults. The next question is again from the oral surgery. Which of the following condition is not linked to the bilateral subconjunctival ecchymosis? So Lefort 2 fracture, Lefort 3 fracture, nasoethmoidal complex fracture और Lefort 1 fracture. तो बायलैटरल सबकंजक्टिवल इकाइमोसिस है, बट उसका एक्सेप्शन तो कौन से फ्रैक्चर्स में मेंशन जो भी किए हैं उसमें वो दिखता नहीं है. तो लिफोर्ट 1, लिफोर्ट 2, लिफोर्ट 3 एंड नाजो इथोमॉइडल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. Then 11th MCQ, cavernous sinus thrombosis may develop as a result of a spread of an odontogenic infection via tissue spaces or lymphatic route or hematogenous route or all of the above. तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, बट वो कहाँ से स्प्रेड हो सकता है? टिश्यूज से या लिम्फ से या हेमाटोजेनस रूट से. Then 12th question, the main factor responsible for the lateral food impaction is, A option is uneven alteration of the occlusal surface, B option is open proximal contact, or C option is open gingival embrasure, or last है all of the above. Occlusion के related question है 12th. 13 is like a condition in the oral cavity that increases caries activity is xerostomia. B option is fissured tongue. C option is hairy tongue, and last is watery saliva. So a condition whether xerostomia increases caries activity, or whether fissured tongue increases caries activity, or hairy tongue increases caries activity, or watery saliva can increase the caries activity. That was the 13th number question. 14th वाला है, what might be the likely provisional diagnosis in a middle-aged man with a radiograph displaying a cotton wool appearance and blood investigations indicating elevated alkaline phosphatase level. तो अर्ली मॉर्निंग जैसे हमने एएलपी किया ही था कवर, तो उसके ऊपर एमसीक्यू जैसे हमने कहा था कि बहुत बार पूछा जाता है. एंड फॉर्चुनेटली अभी जो हम पीवाई की उसको कवर कर रहे हैं उसमें उसमें से क्वेश्चन आया ही है. सो इज इट अ पैजेट डिसीज और चेरिविजन और फाइब्रस डिस्प्लाजिया और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट. तो इन चारों में से कॉटन वूल अपीयरेंस रेडियोग्राफ पे किसका दिखता है? टिपिकल क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता है. Number 15 is pain, muscle tenderness, and clicking or popping noise in temporomandibular joint, and the limitation of the jaw movements are the four cardinal signs and symptoms of Coston syndrome or traumatic arthritis of the TMJ और osteoarthritis या myofascial pain dysfunction syndrome. Pain, muscle tenderness, clicking or popping noise in TMJ and limitation of the jaw movements, ये 4 cardinal symptoms किस चीज के है? The number 16, which is the most prevalent precancerous lesion associated with the oral malignancy? Sorry. तो क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक कैंडिडियासिस और ल्यूकोप्लाकिया और डेंटल अल्सर्स और अट्रोफिक ग्लॉसाइटिस. तो मोस्ट प्रिवेलेंट प्रीकैंसरस लीजन बट एसोसिएटेड विद द ओरल मैलिग्नेंसी कौन सा है? तो ए ऑप्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक कैंडिडियासिस और ल्यूकोप्लाकिया और डेंटल अल्सर्स और एट्रोफिक ग्लॉसाइटिस. Number 17th MCQ, the fusion of the roots of the adjacent teeth through the cementum is known as concrescence, fusion, gemination or none of the above. तो काफी सिंपल सा है क्वेश्चन. देन कौन से है नेक्स्ट वाला 18 नंबर का? रेजिस्टेंस फॉर्म is defined as the shape of a cavity which
prevents displacement restoration, एक, या B, which permits the restoration to withstand the occlusal forces, या C, which prevents displacement of the restoration and permits restoration to withstand occlusal forces, और D ऑप्शन है which allows for the adequate instrumentation. तो ये भी हमने डेंटल बूस्टर्स में कवर किया है, ऑल द आउटलाइन रिटेंशन रेजिस्टर फॉर्म्स. So again, I'm repeating, resistance form is defined as the shape of the cavity which can prevent a displacement of the restoration. A option. B option is like which permit a restoration to withstand the occlusal forces. C is which prevent the displacement of the restoration and also permits restoration to withstand occlusal forces. And last, which allows for the adequate instrumentation. Then we have next question. Breakpoint chlorination indicates, A option is start of the chlorination process, B, end of the chlorination process, C is point where free residual chlorine starts appearing, or the last option, point after partial saturation of the water with the chlorine. So break point chlorination. All these topics we are going to cover in our Telegram live podcast. We are right now simply just like reading and going through all the MCQs and options. 50 ही है तो सिंपली जल्दी हो जाएंगे. Number 20, the first manifestation of a shock is hypertension. B option is constriction of pupil. C option is hypotension. And D option is tachycardia. तो शॉक जब होता है पर्टिकुलरली फर्स्ट मैनिफेस्टेशन कौन सी चीज से दिखता है? हाइपरटेंशन होता है, या प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होता है, या हाइपोटेंशन होता है, या टैकिकार्डिया होता है? The next question is, one common radiographic finding in clinical gingivitis is vertical bone loss, A option, या B, normal bone pattern, C option is horizontal bone loss, or D is increase in the bone density. तो gingivitis का radiographic finding, तो ये भी कंफ्यूजिंग तो है, सिंपल है बट वो काफी इसमें पूछा गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. The ratio of the number of deaths under 1 year of age to the total live births per 1000 live births per year is termed as mortality rate, A option, B option is child mortality rate, C is child morbidity rate, और डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. तो कम्युनिटी सा क्वेश्चन है कि रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 year ऑफ एज टू द टोटल लाइव बर्थ्स पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर. तो मॉर्टेलिटी इन्फेंट की, चाइल्ड की, या मॉर्बिडिटी, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द नेक्स्ट है 23rd नंबर का, विच इंप्रेशन मटेरियल्स अंडरगोस हिस्टेरेसिस. So irreversible hydrocolloid, reversible hydrocolloid, impression plaster, or metallic oxide paste. So this is again the MCQ from the recent topics we have covered in the YouTube and Telegram live, जिसमें हम impression materials waxes जब हम cover कर रहे थे. तो next question is, oral prophylaxis is contraindicated in, A option is P, pubertal gingivitis, B option is pregnancy gingivitis, C option is ulcerative refractory gingivitis, and last option is leukemic gingivitis. Whipple home study is used in oral cancer or AIDS or dental caries or periodontal diseases. This is again a MCQ which we have already covered in the live classes. So waste water from the kitchen is known as sewage, garbage, or kitchen water. Okay. तो ये शायद पढ़ना पड़ेगा कि वाटर पोल्यूशन के टॉपिक में आ जाता है एक्चुअली कम्युनिटी में. The number 27th is, the coefficient of the thermal expansion of a tooth enamel is closest to silicate cement or composite resin or glass ionomers cement or polycarboxylate cement.
So again I am repeating, the coefficient of the thermal expansion of a tooth enamel is closest to which of the cements. Then 28 number, increased spatulation in case of a dental stone results in increased working time or increased setting time or decreased setting time or none of the above. Applied काफी काफी अच्छी क्वेश्चंस है इसमें, so it's a very wonderful thing to just like go through all these resources. Next question, 29th. Which of the following composite resins absorbs maximum amount of water? So microfield resins करते हैं या मैक्रोफिल्ड रेजिन्स करते हैं और हाइब्रिड टाइप करता है या स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट्स. So which of the following mentioned composite resins absorbs maximum amount of water? Number 30, the best radiograph for diagnosing mesiodense is occlusal view या periapical view या panoramic view या bite wing view. तो the best radiograph for diagnosing mesiodense. सो एमसीक्यू इस पेपर के काफी काफी अच्छे इसके लिए भी, लाइक दे आर नॉट जस्ट द सेम कि किसी भी बुक में से आपको ये नहीं मिलेंगे ना, एमसीक्यूज के ना टेस्ट बुक्स है, बट सिंपली दे आर वेरी गुड एमसीक्यूज. आई कैन क्लियरली सी दैट. तो 31st है, द प्रीडोमिनेंट सेल टाइप इन द जिंजाइवल क्लेविकुलर फ्लूइड इज मस्ट सेल और प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. सो जिंजाइवल क्लेविकुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट सेल टाइप कौन सा होता है? मस्ट, प्लाज्मा, मैक्रोफेजेस और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ओके. 32, what is the most prominent difference between gingivitis and periodontitis? So gingival sulcus or periodontal pocket or loss of epithelium attachment or mobility of the tooth. Number 33, apical constriction is otherwise known as minor diameter or major diameter or radiographic apex or tooth apex. Then 34, lentulospiral are used for locating canal orifices or pulp extubation or enlarging the coronal third of the root canal or application of the root canal sealer. Number 35, the most useful method in differentiating an acute periapical abscess and periodontal abscess would be anesthesia test or percussion test or radiographic examination or simply pulp vitality test. Then we have hot tooth. उसका क्वेश्चन है 36 नंबर. Tooth in line of fracture, difficult to anesthetize or vertical line fracture or very sensitive to heat test. Then number 37, the maxillary tooth with the highest incidences of the extra root canal is, again I am repeating, the maxillary tooth with the highest incidences of extra root canal is maxillary first premolar, maxillary first molar, maxillary second molar or maxillary second premolar. Then moving towards number 38, the which type of bond do we find in setting of a glass ionomer cement, whether it is a covalent bond or an ionic bond or a hydrogen bond or a metallic bond. Number 39, moisture contamination of the zinc containing silver amalgam during trituration or condensation leads to, first is, it causes marked expansion, it increases setting time, it results in a sharp decrease in a flow, or last option, it has no appreciable effect on amalgam. Number 40, the best approach for managing of a 6-year-old child with
temper tantrum during the dental treatment is tell, show, do technique, or voice control, or pre-medication, or simply postponing the appointment. Number 41, the best alternative storage medium for a avulsed teeth in case culture media are not available is so milk, water, saline, or blood. Number 42, the treatment of a choice for a 7-year-old boy who has a fractured maxillary right central incisor at the gingival level with an exposed but still vital pulp 5 hours after the injury is pulpotomy, pulpectomy, or extraction of the tooth, or simply pulp capping. Number 43, the patient's ability to maintain an independent airway and respond appropriately to the physical stimulation and verbal commands is seen in general anesthesia, deep sedation, or conscious sedation, or simply deep sedation and general anesthesia. But last 7 questions we are going to cover that. So resorption of a dental tissue is caused by osteoclast, osteoblast, odontoclast, or odontoblast. Number 45, if the cementum is not formed during deciduous tooth development, so ankylosis may occur, or premature exfoliation of teeth occurs, or there would be a delayed eruption, or simply no changes occur if the cementum is not formed. Number 46, a 40-year-old medically compromised female patient came with a swelling in the lower jaw and gives history of extraction of the molar few days back. So with tongue raised and difficulty in breathing and also high grade fever, what should be the diagnosis? So cellulitis, Ludwig's angina, ranula, or laryngeal edema. Number 47, which of the following is the most common intraoral site for metastasis? So palate, gingiva, mandible, or floor of the mouth. Number 48, non-carious loss of tooth structure due to the chemicals is common uh, site of the basal cell carcinoma in the oral cavity is tongue, upper lip, lower lip, or palate. सिक्किम डेंटल सर्जन PYQs जो भी है उसका लास्ट क्वेश्चन है odontogenic epithelium responsible for the formation of the dental cyst is cell rest of the cere or enamel organ, a reduced enamel epithelium, or cell rest of mala cells.
So almost 50 MCQs we have covered, and इसके बाद में लाइक आंध्र प्रदेश का तो काफी लंबा पेपर है. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज भी चलते रहता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट लाइक थोड़ा सा म्यूट हो जाता हूँ बीच में, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है. तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो रीड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन.
So the best instrument that may be used to enlarge a root canal is a file or a burr, a reamer or a broach. Second question is the best agent to bleach a discolored pulpless teeth is sodium fluoride or zinc sulfate or superoxide or hydrochloric acid. Then third question is apicectomy is indicated in case of periapical infection or abscess or cyst or none of the above. Fourth question, most preferred solution for the root canal therapy irrigation is isotonic saline, hydrogen peroxide, hypotonic saline or sodium hypochlorite. Okay. सो उसके बाद में है इन एंडोडोंटिक treatment EDTA solution is used for first option is to relieve the pain, second option is for a calcified and blocked root canal, C option is fixation of the pulp tissue, or fourth to fill the root canal. Okay. So sixth question, in maxillary first molar the narrowest root canal is parietal or distobuccal, mesiobuccal or none of the above. Seventh MCQ. So indication of the pulp mummification is first option is dental caries on vital tooth. Second option is a non-vital tooth. Third option is accidental exposure of a vital tooth or encourage pulp fibrosis. So pulp mummification. Discoloration of the tooth is due to pulpal hyperemia or reversible pulpitis or acute pulpal abscess or pulpal death. Ninth question from the Andhra Pradesh Dental Surgeon PSC PYQs. The support of a partial denture is obtained usually from occlusal rest support, mucosal support, or tooth support, or simply tooth and mucosal support. Okay. The next question, excessive vertical dimension of a denture
may cause. First option is good denture retention. Second option is over closure of the lips. Third option is poor denture retention, or last is trauma to the underlying supporting structures. The next question is activator in cold curing denture. Resin is a tertiary amine, sodium sulfate, hydroquinone, or benzoyl peroxide. Twelfth question. A centric relation is mandible to skull relationship, mandible to maxilla relationship, maxilla to skull relationship, or maxillary teeth to mandibular teeth relationship. Number 13. हॅलो. हाँ हेलो. म्हटलं So that was the thing for today. दोनों यूट्यूब लाइव सेशन में हमने थोड़े से डेंटल के टॉपिक. जब भी मैं एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करता हूँ उसी टाइम पे ये आवाज़ चली आती है पीछे से, और जब मैं शांत रहता हूँ तो वो भी शांत हो जाती है. तो इट वॉज लाइक क्वाइट फनी एक्सपीरियंस. यहाँ से मैं ज़्यादा लाइव नहीं करता इसी के लिए भी, नॉट इवन टेलीग्राम के लाइव पॉडकास्ट, नॉट यूट्यूब, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत बहुत चीज़ें आवाज़ करती है तो त्यात काही मजा येतच नाही. मग तो आई विल ट्राई टू जस्ट लाइक कंडक्ट दिस लाइव सेशन यूट्यूब डिफरेंट टाइम पे, ताकि शायद थोड़ी सी शांति मिले और अच्छी तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सके. तो बस एक बीच में कॉल आया था मुझे, आई जस्ट लाइक हैव टू लीव राइट नाउ. सी यू सून, गुड बाय. पढ़ते रहिए सिक्किम की और आंध्र प्रदेश की लेटेस्ट रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज फॉर द डेंटल सर्जन, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स वी आर गोइंग टू शेयर ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल. तो काइंडली डू करेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर टेलिग्राम चॅनल. क्विक डेंटल नावाने आहे ते, किंवा सिम्पली व्हॉट्सअप नंबर आहे 8975170145. त्याच्यावरती पण तुम्ही जर मेसेज केला तर तुम्हाला तो सिम्पली लेटेस्टवाले दोन्ही सिक्कीमचे आंध्रचे पीवायक्यूज मिळून जातील.